अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? सॉरी मैं इधर नहीं थी, मैं देख नहीं सकी। Cook and Inspire is with us. Hello chef, how are you? I was waiting for the coffee to stop brewing so I can stop making that noise. Okay, let me turn the lights on. Assalamu alaikum and hello. Hello everybody, welcome, welcome, welcome. Thank you for coming. All right. It took a lot of time to prepare today. And I'm still not sure if I got everything right, but let's get started. It took a lot of time to prepare today. I'm still not sure. Adiba is here. Assalamu alaikum, Adiba. On the table, I have everything that I'm going to need for the toppings. One second, I forgot to mute my laptop. Sorry about the echo. Sorry, is the voice better now? Thank you, chef. Thank you for coming. Adiba, thank you for coming. Mobi's Kitchen, thank you for coming. So what I did was I already prepared a dough. That's right here. That was 45 minutes ago. So it's coming up perfectly. Perfect speed, let's say. So that's what I got in 45 minutes. I'm going to start with that. But before I do that, let me make another one for the one that we are making without cheese. So before I start, let me say that if you need accurate measurements for a pizza dough, you can go to Mobi's Kitchen. He knows precisely, perfectly everything, every measurement. For me, I'm just gonna do it like a housewife. I'm gonna show you guys what works for me. So I'm gonna need really hot water, 1/3 cup, right out of the tap. For 2 cups of all-purpose flour, I use 1.5 tablespoon of yeast, not full level, and I use 2 teaspoons of sugar and 1/2 teaspoon of salt, because salt you can always go according to your own taste. So let's get one dough done. I find out to make pizza you have to move a lot of things around in my kitchen. That's a lot of stuff that needs to be moved around. Okay. So I'm just gonna add 1 tablespoon of sugar. That's 2 teaspoons. 1/3 cup of hot water. That's very hard to touch, but it's not. So 1.5 spoon of yeast. Going to let it sit for a few seconds. I know right now what Moby is thinking. Okay, I'm gonna let it sit for 2-3 minutes.
Meanwhile, we're gonna need also the yeast has to be fresh. That's why I'm running a little bit late because my yeast was out of date, so I had to go get another one. So it came a little bit late. When you are baking, you know, there's one thing that can let you down is your yeast. If you don't have active dry yeast that's fresh, mine was 1 year old, so you can imagine. Okay, I will come to the chat in just a minute. Let me take out this is all-purpose flour, 2 cups, loosely packed. You can sift it if you want, but I never do for some reason. And you can go ahead and you can keep another half cup or 1 cup handy, just in case, you know, it gets too loose, you will have to knead a little bit more. There's just so much stuff in the kitchen today. Alright, so who do we have? हमारे पास आ गए हैं गर्देजी भाई आ गए हैं हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम गर्देजी भाई, हाउ आर यू? और हमारे साथ कौन है? साकी हैं, मोबी हैं, अदीबा हैं, कुक एंड इंस्पायर, शेफ गार्नेट है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम and welcome. Sorry, I was busy doing, you know what? Okay, so what works best is वुडन स्पून. अगर आपके पास है डोई चमचा, जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं लकड़ी का, उसकी बैग से आप पिज़्ज़ा का जो है ये बना सकते हैं. इसे मिक्स करें, आप कोई और चीज़ यूज़ ना करें. मुझे यही पता है कि ये बेस्ट होता है. ठीक है, अब ये देखें, यीस्ट जो है चीनी उसको खाती है. ठीक है, चीनी को यीस्ट बहुत पसंद है. तो हमने गर्म पानी में डाला है और वो बिल्कुल बबल होके इस तरह आ गई है. ये देख लें. अब इसको हम इसको डाल देंगे अंदर और उसको मिक्स करना शुरू कर देंगे आटे को. आई डोंट नो where it should be. Okay. बिल्कुल सिंपल मेरा घरेलू नुस्खा है ये. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ही मुझे सही मेजरमेंट्स के साथ जाना पड़े. लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स चाहिए तो मोबीज किचन जो है उनके पास बहुत अच्छी मेजरमेंट्स हैं. पिज़्ज़ा की वो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट दिखाएंगे वहाँ पे. मेरा ख्याल है उन्होंने पिज़्ज़ा बनाया था, राइट मोबी? आपने बनाया था ना, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. अच्छा, अब हमें बहुत गर्म पानी चाहिए. इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, साथ में पानी लेके आ रही हूँ. 105 डिग्रीज फ़ारेनहाइट विल बी द बेस्ट. आपसे बात करते हुए मैंने पानी को कप में लेना ही भूल गई. पानी गर्म करके मैंने रखा हुआ है और मैं उसको लेना भूल गई. ओके, सो अराउंड 1 कप वाटर इसमें जाएगा. थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है और आपने उसको मिक्स करते जाना है. बहुत ज़्यादा नहीं एकदम से डालना है. इफ यू पुट टू मच एट द सेम टाइम. ओके, सबसे पहले मैंने यीस्ट डाली है, फिर मैं गर्म पानी डाला है और अब मैं उसके अंदर थोड़ा सा हाफ टी स्पून सॉल्ट डालने लगी हूँ. सॉल्ट ऑप्शनल है. If you guys are not supposed to have salt or you don't like too much salt, you can just put a pinch in or you can just skip it. मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ. This is for flavor purpose. Little bit more, then I'll show you the dough coming together. फिर हम इसको रख देंगे राइज होने के लिए. 45 minutes से 1 hour में मेरा डो जो है वो राइज हो जाता है. ठीक है, now I'm going to do, after I'm doing this, अब मैं उसको हाथ से करूँगी. ठीक है, I'm going to use my hands. I don't know if I can bring the camera up a little bit because looking inside of that dish is a little hard. Okay, I think I got it. Okay, ठीक है. At this point हमने सिर्फ उसको, we just have to bring it together like that. So once your dough is together,
I'm going to need a little bit oil on my hand and I'm going to let it rise. उसके बाद दूसरा काम करेंगे. ठीक है, देखा आपने? It has to be sticky like this. ठीक है? It's going to be a sticky mess, but then again, this is what works for me. अगर इसमें डालना चाहूँ तो मैं एक चुटकी आटा और डाल के उसको ऐसे ऐसे कर लेती हूँ ताकि वो नीचे से चिपकना उसका बंद हो जाए, एंड देन उसको राइस होने के लिए रख देंगे. ओके, फिर काउंटर साफ करेंगे एंड देन वी विल मेक द पिज्जा दैट द डो इज ऑलरेडी रेडी फॉर. ये नाइस एंड वार्म है. ठीक है, नाइस एंड वार्म है. आपने इसको इसी तरह लपेट के रख देना है ताकि वो राइस हो जाए. जो प्रोफेशनल होते हैं, आई थिंक पीपल राइस इट ओवरनाइट फॉर पिज्जा. यू कैन डू दैट. You can let it rise overnight, but at least 45 to 1 minutes चाहिए होता है. If you don't like, if you like thin crust pizza, then you have to make a little bit change in the measurements. Okay. जो आप घर में बनाएंगे उसका टेस्ट फर्क होगा. I'm taking a little bit oil on my hands. I'm going to let it rise in here. Usually I have a plastic bucket, but there are just too many things in my kitchen today. Okay, so this guy is going to sit in here. बेटा भाई देखो कौन है. Coming. Yeah. Everything goes hand in hand. इसको कवर कर देंगे. Sorry guys, sometimes my kids can be very very lazy, so I just had to go and check who was on the door. They're probably sleeping. Okay, this was going. अब इसको मैंने इसी वक्त इसको कवर करना था. इसके ऊपर प्लास्टिक भी लगा सकते हैं. ये देखिए, ये वाला डो जो है वो रेडी हो गया है. ये ठीक है. ये मैंने 11:30 पे इसको किया था अराउंड. सॉरी, इसको भी हिलाने का टाइम आ गया हुआ था. अच्छा, एक सेकंड. कौन क्या बात हो रही थी? मैं थोड़ा सा मिस कर दिया है. वो किसी कह रहा हूँ मैं पिज़्ज़ा ओके. अदीबा कहनी है मैंने कभी नहीं बनाया पिज़्ज़ा. बहुत इजी. मैं इसलिए आपको ना इजी बिल्कुल होममेड वाली बता रही हूँ. मैं ये देखें, काउंटर मैंने साफ कर लिया था. इस काउंटर के ऊपर आज हमें ढेर सारा चाहिए मैदा. दैट्स व्हाट यू कॉल इट राइट. मैदा खुश्का जो हमें चाहिए एक्स्ट्रा, ताकि मैं डो को नीड कर सकूँ यहाँ पे थोड़ा सा. और मैं इसी के अंदर दूसरा पिज़्ज़ा जो है उसको डाल के रखने लगी हूँ बिकॉज दैट वर्क्स नाइसली. मैं एक डिश को दूसरे से कवर कर देती हूँ. I'm a little bit unorganized today and I'm sorry about that. It's just a lot going on in this house. Let that sit there. बहुत इजी है. मैं एक डिश को दूसरे डिश से कवर कर देती हूँ. What are you talking about, Moby? मजाक तो नहीं करो. आज तो मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ ऑर्डर हूँ फॉर सम रीजन. ये ले, हम इसको राइस होने के लिए यहाँ पे रख देते हैं.
ग्लास की इसी डिश में, ताकि आपके सामने राइस हो ये। नहीं तो मैं इसको माइक्रोवेव, एम्प्टी माइक्रोवेव में रख देती होती हूँ, तो उसमें ये ऐसा ऐसा होता रहता है। या आप इसको कवर करके उसके ऊपर टॉवल रख के फ्रिज के ऊपर रख दें, उसके ऊपर भी बड़ा अच्छा राइस होता है। जब मैं नान के लिए बनाती हूँ तो मैं उसको फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ। ये कवर कर दिया उसको, there it's gonna sit over there. Okay, let me dry my hands now. Sorry guys. Okay, इसका पेड़ा बना के फिर उसको मैंने काट लेना है हाफ में, बिकॉज काफ़ी बड़ा है ये। तो यहाँ फिर हम एक काफ़ी ह्यूज जो है 2 कप्स है ना, तो 1 कप से एक बनाना चाह रही हूँ मैं। My son was telling me not to do this. You don't have to let it rise like that. I quite didn't understand because this is how I'm used to. So I will ask him again कि उसने क्या कहा था। It's still rising. अभी तक वो राइस हो रहा है, because I didn't give it enough time, you know. Okay. All right, guys. I'm not going to make big ones because we have to make different kind today. Let me turn the oven on before I start all that. Bake 350. 350. Okay. Yeah, you can make personal pizza. You can whatever size, it doesn't matter. Well, that was another very unprofessional thing to do, and I just noticed, because I cannot open my drawers of the camera and everything. This is how what you use to cut it, right? So you just make, okay, you just do that, and you just cut it from the middle. Too late now. I already introduced knife to it. Okay, guys, go okay. So this is one, and this is the other one. You guys can laugh on me today because I'm not usually this unorganized, but I am today. Sorry, guys. It's just the grocery was all wrong. इसको बिठा देते हैं यहाँ पे. Let it sit. And this is the one we're going to make first. This is the smaller one. Okay, ठीक है. अब ये ready है. So going to stretch it with hands. इसको हाथ से stretch करना होता है. इसको और कोई और तरीका नहीं है आपके पास stretch करने के लिए. तो you have to have a nice ball in your hands, and then you start stretching it. It's still rising. This is where we need all the extra flour. Oven is being preheated at 350. Okay. So what can you use to do that? Let me see. You can use the cast iron. That's what I'm going to use for one. And then you can use something covered, a tray with a foil. Okay, when it comes to topping, guys, I'm very flexible. I will have to move the table from in front of the oven today. Okay. Let's get this one in, just a little bit of flour. Oh dear God. Moving that camera around is hard.
ओके, जब आप घर में बनाएंगे तो देखिए आपकी फैमिली कितनी खुश होगी, बहुत अच्छा लगेगा सबको। I'm trying to make it thin crust because this is the one that's going without क्या कहते हैं उसको, cheese. Okay, so I'm gonna put it in the oven for a few minutes. Then I will add a little bit of olive oil to it, or I can do it before. Let it get a little bit cooked. अब आप मुझे बताएं कि आप लोग कैसे बनाते हैं. How do you guys do it? The second one I'm gonna use is the cast iron, upside down. ठीक है? Okay, Roxy's here. Hello, Roxy. Welcome, welcome, welcome. I'm good. How are you today? Thank you for coming. I'm just being a little sloppy mess today because it's pizza day, and pizza day is sloppy day. You want this to be firm enough for it to pick it up, and because my dough is still rising, if you don't want to make the dough at home, when you go to a supermarket where the bakeries are, where they bake their own bread, you know what, guys? They always have a dough. They always have. I don't know. For so many years I bought pizza dough before I start making my own from the supermarket where they have all those bakery things like cookie dough and all those things. They always have pizza dough there left over from the bakery, and you can just put it in your freezer and let it sit there as long as you as you want. And then once you're ready for it, what you do is just take it out and let it defrost, and then it will start rising again. Once it's rising, it's good, and just go ahead and do what you have to do. You don't have to make your own. I'm making it because I'm hopeless. You can stretch it as much as you want. Here, get that ready. You can do the whole. I did the whole wheat. It's a little different in the measurements. Once I put this in, I'll take the other one out. Let's see the dough rising. Let me show you. You see the dough we just put in there? It's beginning to rise. So we are going to let that rise. That's what reminded me that I used to buy them from the store. कौन है मेरे साथ और कौन है साथ इसीलिए Mobi's here. Easy food. अस्सलाम वालेकुम करें. वालेकुम अस्सलाम. Easy food. How are you? हाफिज अली जमान है हमारे साथ. हाफिज अली जमान, अस्सलाम वालेकुम. अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए देखूं नहीं तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको देख नहीं रही हूँ. उसका मतलब ये है कि मेरी आंखें थोड़ी सी बिजी हैं. यू आर ऑल वेरी वेलकम 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 फ्रेंड्स फॉर कमिंग ओवर. Just gonna put this one. I'm doing a little bit of olive oil first, and I'm going to put it in the oven and let it get, because this one is hard to take out because I'm going to put it on the cast iron. Okay, but still I'm going to wait for it to get like a little bit cooked before I start with it. Or on my side. That's the homemade way. Homemade pizza are very, very yummy. It tastes different than the professional one. Let me check on the other one. Conham Adiba hai. Okay.
That's something. So that's what was giving the smoke. There's something in there in the bottom. Okay, इसको अंदर रखते हैं थोड़ा सा इसका पहले पिज़्ज़ा ब्रेड बन जाएगी. In 5 minutes, let me clear up this mess. In 5 minutes, we are going to take them out. Just giving them 5 minutes. So this is the active dry yeast you can use. You can always buy it from the market. Always available. Or here, this is how you will see it. I put it in the jar myself. That's how the active dry yeast looks like. This is instant. Jaldi ho jata hai isse kaam. So you can find something like this similar or the same brand, whatever is available. So I'm using instant dry yeast, active dry yeast, this one, same thing, but I put it in a jar. You have to be very careful with, if you put it in the jar, you will have to make sure that the jar is very tight. You don't want any oxygen spoiling it before it's time. Let's move the salt away. We will need it for the other one. दूसरे के लिए चाहिए होगा हमें. Let me clean this up a little bit. हाँ जी, और मोबिस किचन है. दीपा खुश हो रही है. Thank you, दीपा जी. Roxy is still here. Thank you, Roxy. Did I miss anybody? If I missed any friends, I'm sorry. Not my intention. It's just some things are harder to make than others. You needed to focus a lot. A lot of atta, a lot of mess. Atta is, translation to atta is what? Flour. All that flour falling here, falling there, Well, guys, this is the tool you're gonna need. This is the tool that's very handy for so many, many things. If you are dealing with a dough, you must have something like this. I have two of them, and I didn't pull anyone out earlier because my drawer was closed shut because of the table in front of it. All right, so we're gonna leave that here for the next one. Okay, if you're with me, I don't have to write you. Thank you, Diva. Thank you very much. See, because I don't want to make any one of my guests angry. Hafiz Ali Zaman, भाई आप सिर्फ हमारे साथ हैं. अगर हैं तो मैसेज करते जाएं ताकि हमें पता लगता रहे कि आप हमारे साथ हैं. ऐसे ही पता लगता है ना, छोटे छोटे मैसेज करते रहते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि आप अभी हमारे साथ हैं. इसकी अभी हम ज़रूरत नहीं है हमें, बिकॉज हमने डो बना लिया है. 2 cups of all-purpose flour, 1.5 spoon of active dry yeast, 2 spoons of sugar, regular white sugar, half teaspoon or 1 teaspoon of salt for flavor in the dough. We are going to need some olive oil. Let's get our things ready here that we are going to need for the toppings. Anybody who's made pizza at home before, please let me know how you do it. And also let me know what I'm not doing right. Okay, one of the doughs is almost there. I'm going to bring it out. I think I'm going to need a counter for that. बहुत कुछ चाहिए होता है. इसके साथ खलारा बहुत पड़ता है. Too much खलारा. खलारा समझते हैं ना सारे. जब आप पिज्जा बना रहे होते हैं तो खलारा बड़ा होता है. खलारा जो है ना, बस वो मुझे परेशान करता है. Everything else is just fine. अब ये मुझे यहाँ से उठाना पड़ गया because I'm going to need this for the tray I'm bringing out. I'll bring it out on the cutting board.
so I don't mess up the counter. Okay. एक को बाहर लाने का टाइम हो गया है. Always make sure you have your hand is covered properly. You don't want to burn your hands. Okay. Now we can play with this. जल्दी जल्दी इसके ऊपर जो लगाना है वो लगाना है. थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाऊंगी. किनारों पे अच्छा लगता है. If you put it on the sides, they don't look too dry. I think that's enough. So just this is my way. If you have a way, a better way, please let me know. I would like to know because I learn everything by myself for my kids. So please share, like Moby's Kitchen said. Please share with us. किसने बनाया है, कोई बताया हमें कैसे बनाया है. We would love to know about it. Okay. So I just got a tip from my son. He said you can splash a little bit of lemon juice in here for the little tangy taste in the tomato paste. He's worked in, several amazing places where they make amazing food. So he knows what he's talking about. Alrighty. So this is enough. I don't want to do too much of it. Now we need the knife. Let's do a little bit of bell pepper. Moby, how do you do it? आप पहले लगाते हो सब कुछ उसके ऊपर के बाद में लगाते हो. मैं उसको थोड़ा सा कुक कर देती हूँ first. Then I do it. Quick cooking is nice but thick crust. हाँ जी. Thin crust नहीं मैं बना रही. So because I don't want the top of it to stay like soggy. But not too much toppings here. That's it for the pepper. Yeah. Other one needs to come out too. एक को अंदर रखेंगे, एक को निकाल के ले आएंगे. मोज़रेला चीज है, वो ऐसे रखूंगी जहाँ जहाँ से वो मेल्ट हो जाए. और किनारे जो हैं, I don't want the edges to be too dry. That's why I put a little bit of olive oil. That's mozzarella cheese from the local store. You can have the fresh mozzarella cheese. That's good too. Not good. That's best. Sometimes I don't know what I'm saying. If you have fresh mozzarella, that's the best. You can't do better than that. वीजा एक्सपर्ट भाई है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम वीजा एक्सपर्ट भाई. Thank you for coming. किसी को peppers अच्छे लगते हैं? Do you like jalapeno peppers? Let's add a little bit here and there. So I just have to bring that one out. I think it's more than 5 minutes now. That one needs to come out. You can use any topping that you like. Pizza is flexible. In my opinion, it's like a canvas. You go ahead, do what you like. Add a little bit of onions because I don't mind onions. My favorite thing.
add red onion, yellow onion, white onion, जो भी onion आपको अच्छा लगता है, just do it. If you have fresh basil, this is the time to put some fresh basil leaves on it. Okay, that's going in now. Chill with Doreen and Scully is here. Thank you, Saki, caring him. He's an expert saying this is New York pizza. This is this is homemade pizza, bhai. This is homemade pizza. Okay, let me take the other one out. This one is going in. Oven is right behind. और देखो दो भी राइस हो गए. How long are we in this? I hope I'm not going to mess up my cutting board, but it needs to be done. All right. अब इसकी बारी है, ठीक है? This is the one that I'm going to do without cheese. हम ज़्यादा चीज़ नहीं लगाते. हम ज़्यादा चीज़ अगर आप चीज़ को श्रेड करके लगाना चाहते हैं, go ahead and do it. But इसको मैंने पहले भी olive oil लगाया था. I'm going to add a little more to the one I did before. आंसर आप क्या कह रहे हो बेटा? Okay. ये वो है olive वाला, ठीक है? उसको हम olive bread की तरह बनाएंगे. ये मैं बनाया करती थी when my kids were in high school and college. Another surprise thing I use in this one is cumin seeds. You just sprinkle a little bit. When they are toasted with everything, they taste amazing. Thank you, friends, for sticking by me. Thank you very much. My eyes are busy here, but you have Moby to talk to you. You have Moby to welcome you. Thank you, Moby bhai. Wow, thank you. Let's go with the olive. आप इसके ऊपर जितना चाहे ऑलिव रखें. रेड ऑलिव्स दरमियान में से काट के फिर है, ये ऑलरेडी सॉल्टेड है. आप इनको रखें. This is my oldest son's favorite, so today we are doing this one, and we are doing the one with the cheese for the rest. जो न्यूयॉर्क स्टाइल पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा एक्सपर्ट भाई उसके ऊपर वो मोज़रेला चीज़ इसी तरह रखते हैं और फिर उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाते. कुछ बेसल के लीव्स रखते हैं, चीज़ रखते हैं. वो बहुत मज़े का बनता है. जो ब्रुकलिन स्टाइल है. ब्रुकलिन में कुछ पिज़्ज़े बहुत ही अच्छे बनते हैं. जो शिकागो स्टाइल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. शिकागो वाला डीप डिश है. मुझे वो इतना पसंद नहीं. अगर क्रस्ट सागी हो जाए तो वो मुझे पसंद नहीं आता. ओके, सो अब हमने इसके ऊपर काफ़ी ऑलिव्स रख दी हैं. और कौन है हमारे साथ? मोबीज किचन कह रहे हैं well that must taste so good. Yes, it does. I'm also going to throw a pinch of salt on top of it. Let's make it even better. This was me and mine and Kashif's favorite for so many years. जिस तरह अफगानी ब्रेड होती है ना, it's going to taste somewhat like Afghani bread, but with olives and everything. So you can go with this one. You can go so many ways. You can have peppers. You can have sesame seeds on it. It's the olive oil that's going to give it a very beautiful crust. And when you make this one, बहुत जल्दी खत्म होता है. They finish it so fast because it's very tasty. You don't need anything else. You don't need to, just
cut a slice and have it with whatever you drink of your choice. Just a little bit of spinach. Okay. And now a pinch of salt. This is frozen spinach. If I had fresh, it would look even better. But make sure you have enough olive oil on this one. You go ahead with the salt. Just drizzle a pinch of sea salt or whatever salt you have available. जब मैं जो कहती हूँ वो ज़रूरी नहीं होता, वही whatever आपके पास है आप उसको यूज़ कर सकते हैं. This one is ready to go back in. मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसके इस एजेस पे थोड़ा सा और लगा दूँ यहाँ पे, क्योंकि उसी से इसका सारा फ्लेवर आ रहा है. ओके. क्या कह रहे हो बेटा? मुझे कॉफी दे दो कोई. और मुझे कॉफी के साथ smells good? It's not good? क्यों? ओह ओके. आपने नहीं बेटा, मैंने तो रखी है ना मंगा के वहाँ पे. ओके. इसको नीचे रख देते हैं ओवन में और वो वाला ऊपर ले आते हैं. ओके. 15 मिनट्स के लिए अंदर चली जाए. मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ. ये देखें दूसरा वाला. दिस इज द अदर वन जो हम बना रहे हैं. इट्स नॉट डन येट. I'm going to sprinkle a little bit of black pepper on it. Just a pinch. बेटा कॉफी उधर रखिए डाइनिंग टेबल पे. Just where the cheese is, just a little of black pepper. Or you can have red pepper flakes. Okay. इसको भी वापस रखते हैं. गरम 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 है, लेकिन ये देखें ब्रेड कितनी सॉफ्ट आ रही है. सॉफ्ट है, वो ऑलमोस्ट पक गई अंदर से. सो another few minutes to this one. Maybe I will boil it and it's done. पिज़्ज़ा आपको डेफिनेटली बिजी रखता है किचन में. मैं इसको बॉईल करने देती हूँ. ओके. इसको फ्यू मिनट्स देखते हैं. उतनी देर में हम अपना डो चेक करते हैं. नेक्स्ट वाला. टोमेटो सॉस भी बहुत मज़े की बनी है. थैंक यू काशी फॉर द टिप. लेमन जूस वाली. Let's see how this one is doing. If I can take it off. It's halfway there. See? So just have to show it. Let's put it away again. Double. It has to double in size. जो डो होता है उसने जब वो अपने साइज में डबल हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि वो ठीक से बिल्कुल ठीक से हो गया है. It's messy in my kitchen. क्या हुआ बच्चों? इसमें और डाल देंगे ना जी. So I'm back to the chat while there is cooking. Thank you, Moby. Friends, if you are still with us, please keep messaging, because when I come to chat and I don't see any messages, I think you guys are gone. So if you are still here, please message me. If you are not here, thank you very much for coming and staying with us. I'm trying to do all this in 1 hour, guys. That's why my hands are so busy.
जी मोबी क्या कह रहे हैं, दीवा कह रही हैं डिलीशियस, मोबी कह रहे हैं lemon juice make everything taste better and right. Yeah, I have never tried it in my pasta sauce before. Oh, not pasta sauce, pizza sauce before. This is the first time I'm hearing from Kashif that it tastes good. And Kashif did. उसको टेस्ट करके देखो tomato sauce को. It's pretty good. Okay, we are going to wait here to bring that one out. Huh? ये boil पे है और high पे है. Toaster oven हाँ जी. Toaster oven ना. Toaster जो है ना उसको काफी बड़ा है. मतलब उसकी स्लॉट काफी है. हाँ? उधर उसमें. ये आज किचन जो है ना बड़ा फुल है. फुल. जगह बनानी पड़ेगी. इस पे करना. और मैं आपको कुछ सेकंड्स के लिए ओवन ऑलरेडी चल रहा है तो उसका फायदा उठा लो. लेकिन बॉयल पे है. ओके. एटलीस्ट आई थिंक इट्स ऑन बॉयल. जी. Here I tried. हाँ जी. You have to go in 5 minutes, Moby? Oh, okay. All right. मैं क्या कर सकती हूँ. आप जाना, आपको जाना है, आप जाएं. I have to go in 5 minutes. Thank you for coming. Thank you for staying. Thank you for all your support, Moby. I understand. You have to do what you have to do, right? So we are still going to hang out a little bit after the pizza. Up to 1:30. इंशाल्लाह ताला 1:30, 1:40 तक हम आसानी से hang out कर सकते हैं. जहाँ जहाँ आटा नजर आ रहा है ना मैं उसको साफ कर रही हूँ. I'm sorry. It's a lot of flour going around. The friends that are still with us, please keep messaging. I see 10 friends, but I don't see 10 messages coming every few minutes. So at least let me have 5 messages coming. So 5 लोग मुझे पता लगे मेरे साथ में. I know we have friends watching from outside. Thank you very much, guys, for giving me the time and making the effort to let my live run. Thank you very much, guys. आप बाहर से देख रहे हैं. Thank you. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया. Thank you very much. हमारे साथ अच्छा मूवी कौन है? Did I miss anybody? Movies kitchen. अच्छा. अदीबा हमारे साथ हैं. साथी उर्दू आ गए हैं. अच्छा ठीक है. मोबी भाई अभी मेरे और ड्रॉप हो गए आज. उन्हीं की वजह से जो वीडियो नहीं देखते ना उन्हीं की वजह से. फ्रेंड्स आप जो फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूबर्स हैं हमारे साथ, आप प्लीज़ दूसरों की वीडियो देख के तो फिर उनको डन किया करें. नहीं तो नुकसान दोनों तरफ का होता है. फ्रेंड्स दोनों तरफ सफ़र करते हैं. बोथ साइड्स. If you don't watch the video and you just go and you write a comment like good, nice, and mashallah, and then you don't actually watch anything, that's bad. I have someone come in today and they requested me. When I went to their page, it says, friends, please watch my whole video and then give me a comment or whatever. And when the same person comes to mine, right under my yesterday's live, she says, nice, good, mashallah, and then I saw the numbers drop. जी मुझे बताएं. हमारे साथ सनम ज़हरा ब्लॉग्स है हमारे साथ. सनम, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर कमिंग. वेलकम. थैंक यू फॉर कमिंग. बहुत अच्छा किया आप आ गए हमारे साथ. सनम ज़हरा
थैंक यू फॉर कमिंग। हम पिज्जा बना रहे हैं। इस वक्त आपको सिर्फ बोर्ड नजर आ रहा है बिकॉज पिज्जा इज इन द ओवन। ओके, इट्स ऑलमोस्ट डन। I don't know why my broiler is even slower than usual, but that's okay. It's almost there. अभी मैं उसको लेकर आती हूँ, फिर हम उसको यहाँ पे रखेंगे, इसीलिए बोर्ड रखा हुआ है। ਤੁਹਾਨੂੰ इंग्लिश नहीं आती तो सानू पंजाबी नहीं आती, उर्दू बोल लेते हैं फिर म्यूचुअल, ठीक है। पंजाबी आती है लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ, बोलती इंग्लिश बोल लेती हूँ और उर्दू बोल लेती हूँ। पंजाबी समझती हूँ, बोलती हूँ, लेकिन इतनी नहीं जितनी आप फ्लुएंट आप लोग बोलते हैं, कि मुझे बहुत साल हो गए यहाँ पे। कोई गल नहीं, गुजारा चल जाएगा, खैर है। इतनी तो आपको भी आती है पंजाबी, जितनी मैं बोल रही हूँ उतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी, जितनी मेरी पंजाबी है उतनी आपकी इंग्लिश होगी, राइट। आप मजाक कर रहे हैं, आई नो। इट्स ओके। क्यों मजाक करते हो? हाँ जी। तो हमारे साथ सनम है, हमारे साथ अदीबा है, और मोबी भाई चले गए हैं थोड़ी देर के लिए, मोबी भाई को कहीं जाना था। दैट्स ओके, हम मैनेज कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप कम्युनिटी पे मैसेज करते जाए, मैं अभी पिज़्ज़ा निकाल के जरा आती हूँ। ओके आंसर, ये भाई के जो गर्म हो गए या उनको दे दें ताकि मैं पिज़्ज़ा निकाल सकूँ उनसे। एक प्लेट लाएं और ये उसमें ले लेते हैं, ये गर्म हो गए हैं क्योंकि वो ब्रायलर पे है ओवन, तो बहुत तेजी से गर्म हो रहा है बेटा सब कुछ। ओके जी, हम पिज़्ज़ा लेके आते हैं बाहर की तरफ। आपको क्या चाहिए? इधर रखती है मैंने टेबल पे, ये देखो यहाँ पे काउंटर पे रखा हुआ है। दोनों गर्म मसाले ओवन में रखवाए थे, काफ़ी गर्म हो गए हैं। हम डो को देखते हैं कि देखें डो हमारा कहाँ तक पहुँच गया है, ये देखें, ठीक है। इधर से पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, ये कैमरा नीचे लाती हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। इसने साइज में जब इतना सा था जब हमने इसको रखा था, तो ये साइज में डबल हो चुका है। 2 कप है, ये साइज में डबल हो गया है, ये रेडी है। आपके लिए मैंने निकाल दिया उसको, मैं ये निकालने लगी हूँ और आपकी वो ये वाला रेडी है। बहुत गर्म है, मेरा हाथ जला देगा, मैंने थोड़ा सा भी लापरवाही की ना। काशिफ, जब ब्रॉयलर पे करते हैं, काशिफ जब ब्रॉयलर पे करते हैं अपन को, तो वो नीचे की पार्ट बंद हो जाती है कि नहीं? डिपेंड्स, ये मुझे भी समझ के समझ नहीं आई, नीचे से भी चल रहा है और ऊपर से पता नहीं क्या। एनीवेज, ये वाला रेडी हो गया हमारा, ये देखिए इसका क्रस्ट नीचे से भी रेडी है, ये साइड्स भी इसकी ये देखिए पक गई हैं अच्छी तरीके से। पिज्जा खाना हमने है, बनाना तो आपको सिखाया है ना। आपको मैंने डो बनाने का तरीका बताया है। ये मैदा है, 2 कप मैदा है हमारे पास, उसमें हमने उससे बनाया है इसका डो। यीस्ट डाली है उसमें, नमक डाला है, चीनी डाली है, और उसको 1 घंटे के लिए 45 मिनट से 1 घंटे के लिए रखती है, तो डो बन गया। एक आपके सामने और बनाऊंगी तो आपको फिर पता लग जाएगा, अगर आपके पास टाइम है तो हम स्टे करते हैं। एक और आपको बना के दिखा देती हूँ क्योंकि उसका डो जो है रेडी हो गया। दूसरा जो है वो, एक हमने चीज़ के साथ बनाया है, एक हमने चीज़ के बगैर बनाया है। वी हैव बोथ, चीज़ के साथ भी एंड विदाउट चीज़ भी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से उठा सकती हूँ क्योंकि ये पक गया है।
आपने देखा ये ऐसे चीज़ से ब्राउन हो रहा है यहाँ से, क्योंकि बॉयलर के नीचे रखा था इसको मैंने। अब इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। मेरा इंटरनेट तो नहीं खराब कर रहा, स्लो तो नहीं हो गया? हमारे यहाँ मौसम ठंडा हो गया, बाहर खूब वो चल रहा है, हवा चल रही है। इसको लैपटॉप को मुझे दे दो। हमारा किचन आज बिजी बिजी है क्योंकि बच्चों को खुशबू आ रही है दिवस से साफ दोबारा। नहीं क्यों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आऊँगी। बस आप देख रहे हैं मेरा, मैं किस तरह हाथों पैरों से हर तरफ से बिजी रहती हूँ। मेरे घर में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। मेरे हस्बैंड ठीक नहीं है, डॉक्टर और नर्सेस और आना जाना और काफ़ी कुछ मेरा लगा होता है। फिर भी मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ रहूँ। आजकल तो ये जो 1 घंटा मैं आपके साथ आ रही हूँ, 1 डेढ़ घंटा जो लगाती हूँ ना, ये बेस्ट टाइम होता है मेरा फ्री। ठीक है, हमने यहाँ पे बहुत सारा आटा गिराया था, आपने देखा था। सो वी हैव टू क्लीन द काउंटर अगेन फॉर द नेक्स्ट वन बनाए कि नहीं बनाए, कि काफ़ी हो गया? दो तो बनाए ना आपके सामने। बहुत ही इजी है। आपका नीचे मैं जब ये रिलीज करेगी ना वाइट इस रिकॉर्डिंग को, तो उसके नीचे मैं इंशाल्लाह जो मेजरमेंट्स है लिख दूंगी, जो घर घर में मेरे लिए चलते हैं ना मेजरमेंट्स, वो वाले इंशाल्लाह मैं लिख दूंगी आपके लिए। तो बाकी जो है वो इतना मुश्किल काम नहीं है कोई। हमारे सबके घर में मैदा होता है, राइट? आपने 2 कप मैदा लेना है, सिर्फ उसको जो मिक्स करने का तरीका है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो जो उसका जिससे वो फ्लफी होता है, जिससे वो फूलता है आटा खमीर जो है, वो ये है, एक्टिव ड्राई यीस्ट है। 2 कप आटा और 1.5 चम्मच यीस्ट, 2 चम्मच चीनी, गर्म पानी में उसको मिक्स करते हैं, थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं फ्लेवर के लिए, और वो काम जो है हमारा वो हो जाता है। मैं वेट कर रही थी कि मैं दूसरे वाला पिज़्ज़ा भी निकालूं, तो फिर इंशाल्लाह। इसको हम इसमें रख लेते हैं ताकि हमारी वो ट्रे खाली हो जाए। ये वाली ट्रे में बस मेस काफ़ी होता है घर में, आटा आटा हो जाएगा किचन में सारा। 6 फ्रेंड्स हमारे साथ हैं, मैसेज करते जाएं, थैंक यू। आप मैसेज करते जाएंगे, मुझे पता रहेगा कि आप हमारे साथ हैं। दूसरे वाला भी हो गया, ओके। उसको भी लेकर आती हूँ, वो वाला टफ है क्योंकि जो जिसके ऊपर उसको बनाया है ना, कैस्ट आयरन जो लोहे का उसकी ट्रे थी, वो बहुत हैवी है। गरम 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 गरम। जो ऑलिव्स वाला बनाया था ना, ऑलिव ऑयल, हमने उसमें टोमेटो सॉस नहीं डाली, हमने उसमें ऑलिव ऑयल लगा के तो उसको बनाया है ब्रेड की तरह से। ये वो वाला है, इसको निकालना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। कैमरा के पीछे बड़ा कुछ चल रहा है आज। ओवन ओपन हो रहा है, ओवन बंद हो रहा है, चीजें मूव की जा रही हैं, बिकॉज मुझे ख्याल आ रहा है लाइव में पिज्जा बनाना छोटे किचन में बहुत मुश्किल है। जो मुझे पता लग रहा है, that's what I came down to understand that it's very hard to make pizza because you need the oven, you need access, then you have camera and everything. ये देखिए इसका नीचे से क्रस्ट देखें कितना अच्छा बन गया है, और ये बिल्कुल इसी तरह जैसे अफगानी ब्रेड होती है उस तरह की बन गई है। ठीक है, इसके ऊपर जीरा है, वी हैव cumin, spinach, mushrooms, bell pepper, onions and a pinch of salt.
तो बिल्कुल खाने के लिए रेडी है, उसके साथ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है जी, इंशाल्लाह मैं आऊँगी दीबा। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग दैट लॉन्ग। बहुत शुक्रिया, आप इतनी देर हमारे साथ रहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर फ्रेंड्स आ रहे हैं तो ठीक है, अगर और फ्रेंड्स नहीं है हमारे पास तो फिर हम थोड़ी देर में इसको 140 की फिर बंद कर देंगे। क्या टाइम हुआ? मुझे इस पे टाइम भी नज़र नहीं आ रहा। जो मेरा फ़ोन है ना समटाइम्स फ्रीज हो जाता है। जी इंशाल्लाह समन आप हमारे साथ हैं। समंदर आप हमारे साथ हैं सिस्टर, अगर नहीं तो छोटा सा मैसेज कर दें। मैं इसको काटने लगी हूँ, काट के इसके पीसेस कर देती होती हूँ मैं। इसका क्रस्ट भी अच्छा है, अगर आपको नजर आ रहा है, इफ यू कैन सी द क्रस्ट इट्स नाइस। वो भी इसको जाना पड़ गया, नहीं तो वो अच्छा हमें बिजी रखते हैं बातों में कि मेरा ध्यान तो इधर भी लगा होता है। अब आप नाइफ लेके इससे कैंची से आप इसको काट सकते हैं। किचन की कैंची अलग रखी होती है हमने, तो किचन की कैंची से काटना इजी हो जाता है। यू कैन ऑलवेज यूज द किचन shears, scissors, you can use it to cut it. ठीक है, you serve it like that. इसको थोड़ी देर के लिए मैं वापस उसमें रखती हूँ, ठंडा हो रहा है। ठंडा होने से बचाने के लिए थोड़ी देर के लिए उसको वापस रखिए। उतनी देर में हम इसके स्लाइसेस काट लेते हैं। आप इसको यू कैन कट इट एनी वे यू लाइक। ठीक है, आप ऐसे पीसेस काटना है इसको, बिकॉज ये हमने ऐसे ही खाना है। चाय के साथ खाएं, कॉफ़ी के साथ खाएं, सोडा के साथ खाएं, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो जब आप बनाएंगे तो आपको, आप जब इसको टेस्ट करेंगे ना बना के, तो आपको पता लगेगा कि ये ब्रेड है लेकिन बहुत ही मज़ेदार, और इसके साथ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। We added olives, onions, spinach, salt, and cumin. Zira, let me say it in Urdu, zira and प्याज, olives, जैतून जिसको हम बोलते हैं, आपको पता ही है सबको, olives का तो सबको पता है। There you go. It's just so good that you don't need anything with it. You just pick up a slice. You can cut it like this ahead of time. You can put it in the fridge in a Ziploc. You just take one out, you heat it up in the oven or toaster oven, just maybe, and then you know you're ready to eat. The little bit pinch of salt I added on top makes it even better. अगर आपके पास ट्रे नहीं है पिज़्ज़ा की, मैंने ये जाली ली है, जाली के ऊपर मैंने इसके ऊपर फॉइल लगा लिया है, तो वो मेरा पिज़्ज़ा का ट्रे बन गया। ठीक है, पिज़्ज़ा स्टोन भी होते हैं, ट्रेस भी होती हैं, जैसे भी, लेकिन हार नहीं मानते। ये नहीं कहते कि हम बना नहीं सकते, नेवर से दैट हम बना नहीं सकते, हम सब कुछ बना सकते हैं। आज हमें एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हर चीज रख रहे हैं, निकाल रहे हैं ना। किचन भी गर्मा गर्म हो गया है। सनम अगर यहाँ पे होती, सनम के पास टाइम होता तो मैं उनको एक और बनाना सिखा देती, क्योंकि डो तो बन ही रहा था। लेकिन अगर नहीं है तो तब भी ठीक है, शी कैन वॉच इट लेटर, वो बाद में देख लें, उनको पता लग जाएगा कि हमने कैसे बनाया था।
फ्रेंड्स, इफ यू आर स्टिल विद अस, प्लीज कीप मैसेजिंग। आप मैसेज करते जाएं। आपको पता है कि मेरे पास रेड चिली पाउडर भी है, आप उसके ऊपर रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। एड्रियन आ गए हैं हमारे साथ। एड्रियन, हेलो हेलो एड्रियन, हाउ आर यू? वेलकम वेलकम। एक्टिव लर्नर है हमारे साथ। थैंक यू एक्टिव लर्नर, थैंक यू फॉर कमिंग। He's saying hello to everyone. Delicious pizza. Thank you very much. It was very easy the way I made it. Anybody can do it at home. Anybody can make it. It's not something that I'm just doing it myself. I made it longer like a Afghani bread, so it's easier to store it. Homemade pizza, guys. घर में बनाएं, खुद भी मज़े करें और अपनी फैमिली को भी मज़े करवाएं। चाहे तो इस तरह बड़ी स्लाइस काट लें, चाहे छोटी काट लें। अगर आप लोग हमारे साथ होते, जिनको दोबारा देखना था, तो मैं बना देती और बिकॉज मेरे पास डो तो था। सो अगर आपके पास टाइम है, लेकिन आई डोंट वांट टू कीप एनीबॉडी फॉर टू लॉन्ग। बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप सब लोग घबराते हैं, इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको ठीक दोनों तरह का तैयार हो गया है, चीज़ के साथ और विदाउट चीज़। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था कि हमने इसके किनारों पे ऑलिव ऑयल लगाया था और फिर ये देखें इसकी ब्रेड अंदर से फूल के कैसे नरम नरम हो गई है, बिल्कुल एकदम अफगानी ब्रेड की तरह बना है। और उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट है, स्पिनच है, अनियंस हैं, रेड और ग्रीन ऑलिव्स हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप यही कुछ हो, आपके पास जो कुछ भी है आप उसके साथ कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको। और इसके ऊपर हमने होममेड टोमेटो पेस्ट यूज़ की थी, जिसके अंदर हमने ओरेगनो डाला था, ड्राई लीव्स, थोड़ा सा सॉल्ट, लेमन जूस, बिट ऑफ ब्लैक पेपर, और फिर हमने उसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो फिर हमने ये वाला पिज़्ज़ा जो है उसके लिए इसकी बेस पे लगा दिया था। और पहले हमने उसकी ब्रेड को थोड़ी 6 मिनट्स पकाया था, फिर हमने उसके ऊपर सब कुछ लगा के तो रख दिया था। ठीक है, इफ़ आई हैड मोर टाइम आई वुड हैव डन इवन बेटर। लेकिन ये डो राइस हो रहा है, आपके सामने है ये डो। दूसरे वाला जो है ये इतना सा डाला था मैंने, अब ये डबल हो गया है, साइज में यहाँ तक आ गया है। ठीक है, तो अच्छा डो बन गया है। यस, व्हेन यू मेक इट, और जब आप उसको उसकी खुशबू आती है घर में जब बनाते हैं, एक्टिव लर्नर इज राइट। वो कह रहे हैं द रेड इन द पिज़्ज़ा इज मेकिंग इट इवन मोर टेम्पटिंग। ये जो रेड वाला जो है, पेपर्स भी इसीलिए लगाए हैं कलर्स के लिए, और जो टोमेटो सॉस है वो तो रेड होती है। और टेस्ट में ये उनके लिए है, पीपल हु डोंट वांट चीज़ और दे डोंट लाइक टोमेटो सॉस। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, बिलीव मी, वो ऐसा ही करते हैं। तो उनको जब ये स्लाइस इस तरह देते हैं तो वो उनको मज़े से शौक से खा लेते हैं। ये लें, इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा कर दिया। ठीक है, जब ये वीडियो आएगी, आप जिसने बनाना होगा वो प्लीज़ दोबारा देख लेना। अगर फ्रेंड्स कहते तो मैं दोबारा बना देती, लेकिन मुझे पता है कि मैं अकेली बनाती रह जाऊंगी, आप सब भाग जाएंगे और मैं अकेली काम में लगी रहूंगी। इसको खोल के देखते हैं पिज़्ज़ा वो डो कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि मैंने आफ्टर 45 मिनट्स टू 1 आवर डो को आपने थोड़ा सा करना होता है, पंच डाउन करना होता है। कॉफी रेडी है बेटा, ले लो। जस्ट एवरीथिंग इज जस्ट आउट ऑफ प्लेस टुडे। यहाँ वहाँ रखी हुई है मैंने हर चीज़। ये हमने टोमेटो सॉस बनाई थी इसकी, इसमें गार्लिक है, सॉल्ट है, टोमेटो पेस्ट है, वो लेमन जूस है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर है। ठीक है, गार्लिक अच्छा होता है इसमें, गार्लिक और लेमन जूस से सारा इसका जो जायका जो है बहुत अच्छा बन जाता है।
अच्छा, साकी हमारे साथ है. अमेरिकन कुकिंग हेल्दियर इज विद अस. Anna Marie. Anna Marie, how? Hello. Oh, I didn't see you in few days. Thank you for coming. Thank you for coming. Thanks for being here. See, I didn't see you in few days. How are you? Are you doing okay? Thank you very much. Good evening to you as well. Over here we have, this is like a pizza day in my kitchen today. So we made two with and without cheese, with and without पैनकेक. इधर पैनकेक आप भी आ गए. पिज्जा बनाया भाई. हमने पिज्जा बना भी लिया. हम इसका क्रस्ट भी आपको दिखा दूं. ये देखिए इसका क्रस्ट नीचे से, सॉरी नीचे से दिखाई नहीं सक रही. कैमरा नीचे और मैं ऊपर को दिखा रही हूँ. इसका क्रस्ट भी नीचे से अच्छा बना है. ये बहुत हार्ड भी नहीं हुआ. अब ये देखें, क्रिस्पी भी है लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं हुआ. ठीक है. क्या कहते हो आप लोग? एक और बनाऊं कि रहने दो? अगर किसी ने सीखना है तो बता दें. अगर नहीं सीखना, आपको बस बाद में देखना है आपने, तो फिर बाद में देख लेना. ठीक है. मुझे लगता है एक्टिव लर्नर, मेरा ख्याल है कि मोबी जो है वो ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त. मोबी ड्राइव कर रहे हैं, वहीं से वो हमें हेलो कह रहे थे. और काफी देर से वो यहीं पे थे, बस अभी थोड़ी देर पहले गए हैं. आ जाओ भाई, आ जाओ. ठीक है. अब ऐसा है कि मुझे एक और अभी बनाना है. एक नहीं बल्कि दो बनाने हैं अभी और. बिकॉज ये तो एक एक बच्चे के लिए काफ़ी है ना. तो मुझे एक्स्ट्रा बना के रखना भी है फ्रिज में. इसलिए आप लोग से पूछ रही थी कि अगर आपको सीखना है दोबारा तो मैं बता देती हूँ. अगर नहीं सीखना तभी बता दें. लेकिन कोई फ्रेंड मैसेज नहीं करता, इसलिए मुझे श्योर नहीं होता कि मैं क्या करूँ. ओके गाइस, हमारे साथ 9 फ्रेंड्स वॉच कर रहे हैं. फ्रेंड्स प्लीज मैसेज करते जाएं. सो आई नो यू आर स्टिल विद मी. एंड जब आप लोग थक जाएं मेरे से तो बता दें, मैं फिर लाइव बंद कर दूंगी. जी मैं मंडे टू फ्राइडे बनाती हूँ. मंडे टू फ्राइडे, न्यूयॉर्क टाइम 12 to 1:40. 12 से 1, 1:30, 1:40 जितनी देर तक हम लोग हैंग आउट करना चाहते हैं करते हैं, फिर हम बंद कर देते हैं. ठीक है. जिस घर में लड़के होते हैं ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ बनता ही रहता है भाई. दिन में 3 दफा हमारे यहाँ खाना पकता है. इससे सोचो जरा. क्योंकि मुझे काम घर से करना होता है, इसलिए सब फायदा उठाते हैं. अगर मुझे पिक करना है तो मैं बगैर चीज़ के लूँगी. मैं ये वाला लूँगी क्योंकि इसमें ऑलिव, साल्ट, जीरा सभी कुछ मौजूद है. प्याज. आपसे बात करते करते मैं ले गई ना. एक टेस्ट तो करके देखूं कैसा बना है. इसका क्रंच बहुत मजे का है. सॉरी 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 गाइस, मैंने आपके बगैर ही बाइट ले ली है. मुझे देखना था कि उसका नीचे से क्रस्ट कैसा बना है. बहुत ही अच्छा. ये देखें, नाइस एंड क्रिस्पी है. मैं आपको दिखाने के लिए, सताने के लिए नहीं बनाती. मैं इसलिए बनाती हूँ कि आप भी ट्राई करें. आप भी बनाया करो, कोई मुश्किल नहीं होता. अभी देखो जितनी देर मैं अब ये बना रही थी, मेरा दूसरा जो है वो बन गया है. डो, पिज्जा का जो डो है उसके लिए जो आटा जिसको हमने खमीर लगाया था वो रेडी हो गया.
ऑलिव्स भी डाले थे, प्याज भी डाले थे, बहुत कुछ डाला था। ये देखिए इसका पिज़्ज़ा इसका डो बन गया है। अब हम इसको सिर्फ 45 मिनट से 1 आवर के अंदर आपका डो रेडी हो जाता है। तो अगर आप अहेड ऑफ टाइम उसको बना के रख दें, ठीक है, यह बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैंने सिर्फ आटे में रोल करना है, शेप देनी है बस। जी दीवा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। आप तो कम्युनिटी पे मैसेज करती हैं ना, फिर मेरे लिए इजी भी हो जाता है आना। मैंने देखा है आप करती होती हैं कम्युनिटी पे मैसेज। थैंक यू। आप लोग कम्युनिटी पे मैसेज कर दिया करें। सीक्रेट्स ऑफ माय वर्क बाय ज़ेबा एफ्राई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग। देखिए सिस्टर, आज हमने पिज़्ज़ा बनाया है। पिज़्ज़ा बनाया है और चीज़ के बगैर वाला भी बनाया है, चीज़ के साथ भी बनाया है। मैं ओवन को बंद करें थोड़ी देर के लिए। अभी मैं और भी बनाने वाली हूँ। ये इंशाल्लाह ट्राई करना। जब ये आता है ना वीडियो, मेरा ख्याल है 12 आवर्स के बाद रिकॉर्डिंग आ जाती है, या आप उसी वक्त भी देख सकते हैं। जैसे ही ये बंद होगा ना, लाइव बंद होगी, तो उसी वक्त भी आ जाता है। अगर आप उसी वक्त उसको लगा लें तो वो लग जाता है। मेरे लिए 12 आवर्स लगते हैं उनको। साकी हमें मैसेज करते जा रहे हैं साथ। थैंक यू साकी फॉर कीपिंग एन आई ऑन अस। पिज़्ज़ा लुकिंग यम। जी सिस्टर, अच्छा बन गया है। चीज़ वाला ये मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है, और टोमेटो हमने जो सॉस है पिज़्ज़ा की सॉस वो खुद बनाई थी। और इसके ऊपर हमने ज़ीरा दूसरे वाले पे, we had cumin, olives, onion, bell peppers, and a pinch of salt with some spinach. So अगर पिज़्ज़ा खाना ही है तो थोड़ा सा हेल्दी कर दिया है एक को। इसको ब्रेड की तरह बना दिया, अफगानी ब्रेड की तरह। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, थैंक यू फॉर लाइकिंग। बहुत अच्छा लगा आपको आना। मुझे 11 फ्रेंड्स हैं हमारे साथ इस वक्त। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं अब ऐसा करने लगी हूँ कि थोड़ी देर के लिए टेबल वापस लेकर आ रही हूँ विंडो में। एक सेकंड जरा, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो मूव करता रहता है हमारे कैमरा के साथ, कभी आगे कभी पीछे। मैंने ओवन को बंद कर दिया है, इसलिए अब आपको इधर ले आते हैं जहाँ पे हमारा रेगुलर जगह है। जो बन गया है उसको यहाँ रखेंगे। पिज़्ज़ा जो होता है यू कैन ऑलवेज हीट इट अप। आप उसको ओवन में, टोस्टर ओवन में, माइक्रोवेव में, जहाँ मर्जी गर्म करें, और आप उसको उसको अहेड ऑफ टाइम बना के रख सकते हैं। जिस तरह मैं पिज़्ज़ा डो बना के रखने लगी हूँ उसको, तो जब मुझे पिज़्ज़ा बनाना होगा उस वक्त मैं जल्दी से उसको बना देती हूँ। थैंक यू दीपा, मैं छोटी छोटी बाइट लेती भी जा रही हूँ। लेकिन वैसे आपको बता रही हूँ कि अगर आप बना के रख ले तो मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि जब आपका दिल करेगा आप उसको जल्दी से निकालें और कर लें। मैं एक डो और रोल करने लगी हूँ। यहाँ पे काउंटर साफ किया है मैंने। अगर आप आज मेरा काउंटर देख लेना तो आप समझें कि ये इतनी स्लापी औरत है। मुझे ऑलिव्स के साथ बहुत अच्छा लगता है जो ब्रेड बनाई है ना मैंने, ब्रेड की तरह जो बनाया है ना, बहुत मजे का है।
10 फ्रेंड्स हमारे साथ हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। सारा कुछ जो हम डाल रहे हैं उसमें वो भी हमारे साथ है। हॉट पेपर्स, अनियंस, टोमेटो भी रखा हुआ है, बेल पेपर भी रखी है, मोज़रेला चीज़ भी रखा हुआ है। उधर हमने ऑलिव्स और वो सारा कुछ जो है, ये जिस तरह कैनवस होता है उसकी तरह आप इसके ऊपर जो मर्जी डालते जाएं, जितना डालेंगे उतना अच्छा है। इसीलिए टॉपिक्स जो है वो करते हैं ना, वो आपको कहते हैं कि आप बता दें अपनी टॉपिक्स, कौन कौन सी टॉपिक चाहिए आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी मर्जी के मुताबिक चलता है। ये देखें कितना मज़े का डो है, पहले से भी ज़्यादा बेटर बना है। ये भी 2 कप है, तो 2 कप से हम एक लार्ज पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। फोल्ड 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 फोल्ड। अगर हमने उसको ऐसा बनाना है कि हम उसको उठा सकें, तो वी हैव टू मेक इट लिटिल फर्म। इट्स नाइस एंड स्क्विशी राइट नाउ, फ्लेक्सिबल है। 2 कप आटा, 2 टीस्पून चीनी के, 1.5 स्पून जो है वो यीस्ट का। गर्म पानी में सबसे पहले क्या करते हैं, हम 1/3 कप लेते हैं पानी का, उस गर्म पानी का, उसके अंदर हम यीस्ट डालते, पहले 2 चम्मच शुगर डालते हैं, फिर 1.5 चम्मच यीस्ट डालते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। 3-4 मिनट्स के बाद हम उसको देखते हैं कि यीस्ट एक्टिव हो गई है। तो जब यीस्ट एक्टिव हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको आटे में डाल देते हैं। 2 कप आटा, ये जो होममेड जो मेरे लिए तरीका काम करता है मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। अगर हमने इसको छोटे पर्सनल बनाने हैं तो हम इसके 4 बना सकते हैं। छोटे यहाँ से काटेंगे और यहाँ से काटेंगे, ठीक है। इसका मैंने 1 बनाना है, बड़ा लार्ज बनाना है। नहीं तो हम अगर पर्सनल बनाए तो 4 बना सकते हैं। अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं लार्ज वाला पिज़्ज़ा बना के रखने लगी हूँ, क्योंकि लड़कों को फिर भूख लग जाएगी। बिकॉज माई बॉयज दे गेट हंग्री। आई हैव 3 grown boys right now. My son is visiting, then I have my husband and me. तो मिलजुल के हम काफ़ी सारे हैं, तो थोड़े से तो हमारा काम नहीं चलता। ये डो मैंने एक डो से मैंने बना दिया था। आई यूज वन ऑफ द डोज, द अदर वन was rising and this is the one that was rising, ठीक है। So this one is going on cast iron just like before, ठीक है। मैं उसको cast iron के ऊपर रख के तो फिर स्ट्रेच करके ओवन में डाल दूंगी। Thank you friends for still being here. ये देखिए मैंने इसमें cast iron में बनाया था, मैं इसी में दोबारा इसको बनाने लगी हूँ। थोड़ा सा उसके ऊपर फ्लावर करेंगे, फिर इसको उठा के उसके ऊपर डाल देंगे और फिर मैं उसके ऊपर इसको स्ट्रेच करके, जितना मैंने स्ट्रेच करना है मैं उसको करती जाऊंगी, ठीक है। इसको बेलना नहीं है हमने, we just have to stretch it with the hands. Let me push that on the side. It's a lot of sloppy mess, but it's worth it. थोड़ा थोड़ा करके आप हाथ से उसको, उसके साइज को स्ट्रेच करते जाएं जितना बड़ा आपको चाहिए। मेरे पास राउंड पैन नहीं है, तो मैं जिस तरह आपने अफगानी ब्रेड देखी है ना, जस्ट लाइक दैट। ओके, इसको ओवन में रखेंगे फ्यू मिनट्स के लिए, नो मोर देन 5 मिनट्स। सो जब ये थोड़ा सा डो पक जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगाएंगे, टोमेटो सॉस लगाएंगे, चीज़ लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू स्टे विद अस यू कैन स्टिल स्टे विद मी। I'm working on this. Let me wash my hands.
मेरे पास राउंड नहीं है, पिज्ज़ा वाला रॉक मेरी टूट गई थी शायद, मेरे पास अब वो नहीं है, तो आई यूज दिस वन बिफोर. यू कैन यूज समथिंग लाइक दिस. टेक द वायर, put the foil on it, and you can make your own if you want to. Or like me, you can just stretch it on a cast iron, whether it's round or oval or rectangular, whatever. What difference does it make, right? So oven is preheated, so I'm just going to push it in the oven. Just pardon me for a second. Let me check on the oven. Okay, that's good. Bismillah. 350 Fahrenheit works for me, but you can put it even more if you want. 350 के ऊपर उसको थ्रू आउट बनाती हूँ मैं. Friends, if you're still with us, keep messaging. Thank you very much. Let me scrap the flour off again because I'm using the whole dough. जो भी आपको मैंने डो स्ट्रेच किया है वो 2 कप्स है, ठीक है. 2 कप से एक राउंड या किसी भी साइज, किसी भी शेप का पिज्जा बहुत अच्छा बन जाता है. If you have 2 cups of all-purpose flour, maida, you can use 1.5 spoons of yeast, 2 spoons of sugar, half teaspoon of salt, 105 Fahrenheit temperature water to make the dough. जब आप यीस्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं, आपको पता ही होगा, यीस्ट एक्टिवेट हो जाए तो उसको आटे में डाल के तो फिर हम उसको इस तरह बना लेते हैं, ठीक है. You will see in the video later on. You can see how I made the dough. It was simple, easy. 1, 2, 3, and dough was done. Friends, message करते जाए please. Thank you, thank you, thank you. मेरी आइज पे लगी है इस काम के अंदर. That's what happens. थोड़ी देर में मैं बिजी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर you know why? Because I want to be in the chat with you guys. I also want to finish with the dough because it was rising already done. The rising was already done. It was 1 hour already. Because when I started the live, उस वक्त मैंने वो डो बना के रख दिया था. So उसको 1 hour से ऊपर हो गया था. मुझे उसको बनाना था. Otherwise, I would have freeze it. फ्रीजर में भी रख सकते हैं, ठीक है. आप डो को अच्छी तरह से उसको नीड करके तो फिर आप उसको किसी प्लास्टिक के कंटेनर में या जिप लॉक में डाल के तो आप उसको फ्रीजर में रख सकते हैं, ठीक है. सो अब क्या होगा, अभी जो 5 मिनट्स के बाद मैं उसको वहां से निकालूंगी, इसीलिए काउंटर फिर मैं साफ कर रही हूँ. आपको पिज़्ज़ा डो को नीट करने के लिए काउंटर की स्पेस चाहिए होती है. आप उसको किसी और जगह पे नहीं कर सकते बिकॉज यू नीड more than enough space to move it around, you know. So ये वाला काउंटर मेरा जो है मैं इसी काम के लिए रखती हूँ. Friends, if you are still with me, please keep messaging so I know you are with me. Let's cut some of the toppings for the dough that's in there. जो डो बन रहा है उसके लिए थोड़ी सी टॉपिंग्स काट लेते हैं. I think everything has flour in it today. हर जगह पे फ्लावर लगा हुआ है. Okay, with a small knife. We can have some bell pepper. You can cut it longer pieces like this, or you can cut them smaller. Take the veins out and just slice your pepper. फ्रेंड्स, आप मैसेज नहीं कर रहे, आपके मैसेजेस मुझे नज़र नहीं आ रहे. मुझे पता है फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, मुझे फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे आपके मैसेजेस नज़र नहीं आ रहे.
अगर आपको हालापिनो पेपर है तो आप उसको सीजर्स के साथ काट लें, ठीक है। Then we are going to need mozzarella cheese. You can have fresh one or you can have, this is the store bought mozzarella cheese. आप उसकी pieces काट लें like this because that's a big pizza. We're gonna need more cheese than we needed before. I think that's enough. एक्टिव लर्नर हमारे साथ हैं, थैंक यू एक्टिव लर्नर। हम ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, we have olives. If you want bigger pieces, you can cut from the middle. If you want circles, I think we like circles on our pizzas, so we can just cut some circles. Let me pull the camera a little bit back, ठीक है। रेड ऑलिव्स जो हैं वो मेरे पास पिटेड हैं, उनको मैं ऐसे काट के दरमियान में से रख रही हूँ, हाफ हाफ करके। सो ऑलिव्स बहुत अच्छे लगते हैं पिज़्ज़ा के ऊपर। आप उसको सर्कल में काटें ताकि वो ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ज़्यादा छोटा भी ना हो। रेड को भी मैं ऐसे काट सकती हूँ, लेकिन रेड जो है वो सर्कल में इसी तरह काट लें, लेकिन वो पिटेड है तो वो उसको उन्होंने दबाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। There you go. More of the green and some of the red. Then we have onion, प्याज भी डालेंगे उसके ऊपर। रेड, वाइट, येलो अनियन, जो कुछ भी प्याज आपके पास मिलता है, onions are always good on the pizza for me. I don't know आपको कैसा अच्छा बता दें। So far मैं अपनी पसंद बता रही हूँ। मैंने आपसे कहा था, मोबीज ने भी कहा था कि if you guys have another way of doing it or you have any pizza stories, please let us know. We would love to know about your pizza stories, how you made them, कैसी बनी थी। Olives are really really good on pizza or without. वैसे ही olives बहुत मजे के होते हैं। तो ये olives जो है pickled olives हैं, और इसको नमक मिर्च डाल के उसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने ज़रा सा विनेगर और सॉल्ट पेपर के साथ उसको ये डाला हुआ है अंदर टेस्ट के लिए, बे लीफ, और वो इसी तरह उसको मार्केट में बेच देते हैं। सो आप किसी भी जगह पे उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर हमको टोमेटो यूज़ करना है, सो वी कैन जस्ट स्लाइस दिस वन अप, 2 or 3 स्लाइसेस यहाँ से, नॉट दिस नाइफ, रॉन्ग नाइफ है मेरे हाथ में। कुछ लोगों को टोमेटोज की स्लाइसेस भी अच्छी लगती हैं पिज़्ज़ा के ऊपर, तो हम थोड़ी सी 2-3 स्लाइसेस जस्ट फॉर शो ऑफ हम 2-3 स्लाइसेस काट लेंगे। मुझे ज़्यादा सागी नहीं अच्छा लगता, जो जो ज़्यादा वाटरी होती है ना चीज़, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे ऑन द ड्राई साइड अच्छा लगता है। ऑलवेज टॉपिंग रेडी रखें, क्योंकि जैसे ही पिज़्ज़ा अंदर से 5 मिनट्स पक जाए, आप नाइफ के साथ स्लाइस किया करें इसको, ग्रीन पेपर्स को। कहाँ भाग रही है? Get back here, get back over here in this plate. Thank you. ये हाथ हैं, हालापिनो पेपर अच्छी लगती है, लेकिन जो यहाँ पे पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं वो इतनी हाथ नहीं होती, वो पिकल होती है, इसलिए वो ज़्यादा परेशान नहीं करती। फिर हमारे पास प्याज है, ठीक है। इस पिज़्ज़ा पे हम सारी खुशी पूरी करेंगे अपनी। सिक्स फ्रेंड्स अभी भी हैं हमारे पास, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर स्टिकिंग बाय अस। ये देखें, ये देखें, थोड़े से स्लाइसेस कर लें प्याज की, हमने उसको फैला के डालना है, राइट। वी आर जस्ट गोइंग टू स्प्रेड द अनियन अराउंड, सो वी आर हैविंग ऑल दोज यम्मी टॉपिंग्स। आई स्टिल हैव द स्पिनच, ठीक, लेट्स मूव दैट अवे। ओह द पेपर इज हॉट, मेरा मुंह को हाथ लगा है। दैट पेपर इज हॉट। That's jalapeno pepper. Jalapenos are hot. Okay. मैं जरा चेक करूँ हमारा पिज़्ज़ा डो रेडी हो रहा है। यप, नाइसली फूल रहा है हमारा पिज़्ज़ा डो। उसको मैं 2 मिनट में बाहर ला रही हूँ।
हमारी टॉपिंग्स रेडी हैं। हम उसके ऊपर ऑलिव ऑयल का कोट करेंगे ब्रश के साथ। मेरे पाँव के नीचे फ्लोर भी स्क्वीक हो रहा है for some reason। अभी मेरे पास ब्रश है, मैंने कहीं रख लिया। ये हमारे पास फिनिश है, ठीक है, फिनिश पे डाल सकते हैं। मेरा ब्रश कहाँ गया है? मिल जाएगा मिल गया। और वाइट का ब्रश भी है मेरे पास रेडी। ओके, सो हम यहाँ पे अब जगह बनाएं डो को बाहर लाने की। ओ यस, और ये तो हम भूल ही गए, जो हमने टोमेटो सॉस बनाई थी पिज़्ज़ा के लिए। इसके ऊपर रखूंगी ताकि मेरा काउंटर जो है ना वो मेस अप ना हो, क्योंकि वो कैस्ट आयरन बहुत गर्म है, उसको तो उठाना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऑलिव्स को पीछे कर देते हैं। ऑलिव्स हमने डाल दिए हैं। बस ये है, टू मच खलारा होता है। इफ यू अंडरस्टैंड द वर्ड खलारा देन यू नो व्हाट आई मीन। Bringing the dough out. Always make sure your hands are covered and protected. Okay, good. ये आ गया। ये देखें कितना अच्छा फूल गया वो। बहुत गर्म है। You have to be very careful with cast iron. अब हमने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाना है। इसको यहाँ पे सेट कर देती हूँ मैं, ताकि आपको नज़र आता रहे। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लें, उसको जल्दी आप उसके ऊपर ब्रश कर लें। देखिए कितना अच्छा फूल रहा है, नरम नरम बनेगा ये वाला, क्योंकि इस डो को ज़्यादा टाइम मिला था बैठने का, सेट होने का। हम उर्दू इंग्लिश में, सो यू नो समटाइम यू हैव टू फिगर आउट व्हाट आई मीन। डो बैठा, ज़्यादा टाइम मिला था बैठने का, मीन्स उसको राइज करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया था, ठीक है। हमने इसके ऊपर ही ब्रश कर दिया। थोड़ा सा हम एंड पे जो उसका एजेस हैं उसके ऊपर करेंगे। अब हम अपना पिज़्ज़ा लेंगे सॉस और उसको भी लगा देंगे। जो फ्रेंड्स हमारे साथ हैं मैसेज करते जाएं। एक्टिव लर्नर हमारे साथ बात कर रहे हैं। एक्टिव लर्नर मैं टाइम टू टाइम आपके मैसेजेस देख रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। मोबी भाई चले गए थे, यू कवर्ड फॉर हिम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। मोबी भाई ड्राइव कर रहे हैं, उनको शायद कुछ करना था काम। तो जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, मेरी आइज़ जो होती हैं ना वो कुकिंग पे भी लगी होती हैं, चैट पे भी, बट स्टिल आई मिस समटाइम्स। इफ आई मिस समबody प्लीज डोंट फील बैड, इट्स जस्ट बिकॉज आई एम मल्टीटास्किंग। ऑलराइट, ये हो गया। नॉट गोइंग टू पुट टू मच सॉस, बस जस्ट टू कवर द बेसिस। You don't want it to be soggy or runny. You just want the tomato sauce to stay there. So you can do it two ways. You know, you can grate the cheese, or you can just add the cheese like that. नहीं बेटा, मैंने अभी कॉफ़ी नहीं पी है। मैं अभी डो को फिनिश कर रही हूँ और चैट कर रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। At least I'm trying to keep talking to them. Okay, so हम यहाँ पे रखेंगे एक स्लाइस, 2 स्लाइसेस, 3 स्लाइसेस, और हर स्लाइस के ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ रख देंगे ताकि वो उसके ऊपर मेल्ट हो। रिमेंबर, हम शॉप करने की ट्राई करें। फिर हम प्याज डालेंगे। यू हैव टू मेक इट लुक गुड। जब भी कोई चीज़ बनाएं तो आप कोशिश करें कि वो बहुत अच्छी लगे, क्योंकि जब वो अच्छी लगेगी तो आपको खाने का भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जो होता है उसकी कोई बात नहीं। यू कैन ऐड रेड पेपर्स वेयरएवर यू वांट,
जहाँ दिल चाहता है उनको रखें। We're going to add some green. We're going to add some hot chilies right on top of the cheese. कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा। और चीज़ के साथ उसका जो तेज़ी है पेपर की वो भी फिनिश हो जाएगी, ठीक। नाउ यू गो विद द ऑलिव्स। अब जहाँ उनको चाहे आप ड्रॉप करते जाएं। इज इट लुकिंग गुड फ्रेंड्स? मुझे मैसेज करते जाएं, सो आई डोंट फील लाइक आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड आई नो दैट यू आर विद मी। थैंक यू वेरी मच। इफ यू आर विद मी प्लीज लेट मी नो। जस्ट कीप ब्रिंगिंग स्मॉल मैसेजेस। एक जगह पे ज़्यादा ग्रीन हो गया कटहल, रेड रेड रेड। अब ये पिज़्ज़ा नीचे से पक रहा है बिकॉज इट्स इन कैस्ट आयरन एंड इट्स स्टिल कुकिंग फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप। वी कैन ब्रॉयल इट। ब्रॉयल करने से चीज़ जल्दी मेल्ट होता है और ठीक है। So this is pretty much what we are doing right now. So we can add just a little cheese here, a little more cheese there. जहाँ पे कम है वहाँ पे थोड़ा सा और रख दें, यहाँ पे शायद। ओके, मैसेज करते जाएं। Keep messaging friends and please leave a message on the community. If somebody wants to make friends with you, they can go to my community, host community पे जाएं and you can make friends from there. हमारे साथ 7 friends हैं but I'm not seeing any messages except for active learner. Thank you active learner, आप मैसेज कर रहे थे मुझे। Put a little bit more brush oil on the sides of your pizza. A little bit more olive oil. Olive oil से टेस्ट भी डेवलप हो जाता है पिज़्ज़ा का and the crust will become nice and crispy and it will not look too dry because sometimes when the pizza comes out the crust looks too dry. All right guys, I think I'm done with this one. This is going back in the oven of 400 Fahrenheit now. पहले मैंने 350 पे किया था, मैं 4 पे उसको चीज़ को मेल्ट करूँगी। All right. Okay, ठीक। Again, let's clean the. Oh, I forgot the spinach. Let me drop some on it. आपने मुझे याद ही नहीं कराया किसी ने कि उसके ऊपर स्पिनिच भी डालनी थी। स्पिनिच पास रख के बैठी हुई थी। स्पिनिच से प्यारा कलर आ जाता है उसके ऊपर एंड इट्स हेल्दी। इट गेट्स लिटिल क्रिस्पी ऑन द टॉप और बहुत मज़े की लगती है, ठीक है। अगर आपके पास केल है तो आप केल डालें, अगर केल नहीं है तो आप स्पिनिच डाल दें। ओके, डन। इट्स लुकिंग प्रीटी। Let me turn the camera for you so you can see. Right there, it's looking nice and pretty. Take. हम तो शुक्र कह रही हैं, great job जी मामा, thank you very much. मैं तो समझ रही थी आज आप आई नहीं। ओके, हमने ओवन को कर दिया है 400 पे ताकि चीज़ जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए और हम अपने काउंटर पे वापस ले आते हैं अपने पिज़्ज़ा की प्लेट्स या विंडो में ले जाते हैं, जैसे भी इजी है। आज काउंटर इसलिए चल रहा है क्योंकि विंडो के सामने हम टेबल नहीं रख सकते, वहाँ पे ओवन की वजह से टू मच हीट है। शुक्र, गुड जॉब, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सिंपली लिविंग सलाम कह रही हैं, वालेकुम अस्सलाम सिंपली लिविंग, थैंक यू फॉर कमिंग। आज लंबी हो गई, थोड़ी सी लाइफ लंबी हो गई क्योंकि मुझे डो भी फिनिश करना था, फ्रेंड्स भी साथ थे, इसलिए मैं फिर बनाती रही। ठीक है, काउंटर को दोबारा साफ कर लेते हैं और पिज़्ज़ा यहीं पे ले आते हैं क्योंकि विंडो आज जो है वो उसके सामने टू मच हीट है। तो 2 तरह का मैंने आपको दिखाया है, अब थर्ड वाला जो है वो आपका बन रहा है, ठीक है। एक
ब्रेड की तरह बनाया है हमने बगैर चीज़ के, और एक हमने बनाया है चीज़ और टोमेटो सॉस के साथ, और जो थर्ड वाला बनाएंगे उसके ऊपर सब कुछ है, टोमेटो सॉस भी है, चीज़ भी है और फुल टॉपिंग्स है। ठीक, कैसे हैं सब? पूछ रही हैं सिंपली लिविंग। हम सब ठीक हैं, आप कैसी हैं? आप भी बताएं। हम सब बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा मैसी मैसी काम कर रहे हैं आज, हर जगह पे आटा आटा हुआ है, लेकिन हमने मज़े मज़े का पिज़्ज़ा बनाया है, चीज़ के बगैर बनाया है, चीज़ के साथ। आपको भी ऑलिव्स अच्छे लगते हैं? ठीक है। पिज़्ज़ा इज़ लुकिंग गुड कह रहे हैं एक्टिव लर्नर, थैंक यू वेरी मच। एक्टिव लर्नर जो मैंने आपके लिए पिज़्ज़ा बनाया है वो अभी इस वक्त ओवन में है, जब वो आएगा तो वो इससे भी अच्छा लगेगा आपको। और जो मैंने थर्ड वाला बनाया है वो मैंने एक्टिव लर्नर के लिए बनाया है, वो सीख रहे थे, देख रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था, वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। आप लोग भी बनाइएगा, आप लोग भी ज़रूर बनाएं। उसकी खुशबू से भूख जाग जाती है, और आप एक्स्ट्रा जो होता है घर में बनाएं तो एक्स्ट्रा भी बन जाता है, फिर आप उसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। बाय द वे मेरी तो सुबह की कॉफ़ी चल रही है अभी अभी दोबारा बच्चों ने गर्म करके दी है। ये अंदाज़ा नहीं था कि पिज़्ज़ा बनाने के लिए लाइव इतना ज़्यादा करना पड़ेगा स्ट्रगल मुझे, बिकॉज काफ़ी खलारा डल जाता है। जो थर्ड वाला है वो आपको ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं साथ साथ मैस जो है वो साफ़ करती जाऊँ। अब पिज़्ज़ा बनाना तो सबको आ गया होगा, अगर किसी को दोबारा पूछना है कि मैंने डो कैसे बनाया था तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें कि मैंने डो कैसे बनाया था। होममेड डो है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। जहाँ आपकी बेकरी होती है ना, किसी भी कंट्री में जहाँ पे बेकरी है, आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, सुपरमार्केट में उनकी अपनी बेकरी है जहाँ वो अपनी ब्रेड्स बना रहे हैं या दूसरी चीज़ें बना रहे हैं, वहाँ पे डो भी होता है। आप अगर उनसे वो डो ले लें तो आप उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, और फिर जब आपको उसको इस्तेमाल करना हो यू कैन जस्ट टेक इट आउट ऑफ द फ्रीज़र और उसको डिफ्रॉस्ट करें, वो फिर वो फूलना शुरू हो जाता है और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे पाकिस्तान का पता नहीं, लेकिन यहाँ पे सब कंट्रीज़ में जो सुपरमार्केट्स हैं जिनके साथ बेकरी है वहाँ से डो मिल जाता है। ज़रा देखना पड़ता है, क्योंकि उनका जो लेफ्ट ओवर डो होता है वो उन्होंने रखा होता है पैकेट में डाल के, उसको ऊपर से उन्होंने सील किया होता है पैकेट को, तो आप उसको लेके उसी तरह फ्रीज़र में डाल सकते हैं। सिंपली लिविंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लाइकिंग। हमारी सिस्टर भी आई थी यहाँ पे, वो कहाँ गई पता नहीं, हमारे साथ हैं या चली गई हैं। ज़ेबा सिस्टर आई थी, ज़ेबा सिस्टर आप सिर्फ हमारे साथ हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आना, आप फर्स्ट टाइम आई हैं हमारे पास। आप कम्युनिटी पे थोड़ा सा मैसेज भी कर दें। ज़ेबा सिस्टर हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, लेकिन आज वो फर्स्ट टाइम आई थी हमारे पास। एक्टिव लर्नर हमारे साथ हैं, तो शुक्र हमारे साथ हैं, 8 फ्रेंड हमारे साथ हैं। Simply living, thank you very much. Guys, just excuse me for 1 minute, मैं जरा डोर पे देखने को।
मैं एक स्लाइस खा रही हूँ जो मैंने ली थी यहाँ से, जीरा एंड सॉल्ट वाली, ऑलिव वाली, वो बहुत मजे की है। लेट मी चेक ऑन द किचन। एकदम फर्स्ट क्लास, 2 मिनट में बनने वाला है। 2 मिनट में वो बाहर आ जाएगा ओवन से। सिंपल लिविंग भी आप प्लीज वहाँ पे जरा कम्युनिटी पे मैसेज कर दें ताकि मैं वहाँ से आपकी तरफ आ सकूँ। अब हम लिंक नहीं लगाते आजकल, आपको पता है सब क्या चल रहा है। तो आप कम्युनिटी पे मैसेज कर दें तो वहाँ से इंशाल्लाह ताला मैं आपकी तरफ आऊँगी। इंशाल्लाह ज़रूर एक्टिव लर्नर आपकी तरफ आएंगे। एक्टिव लर्नर उन्होंने वो कम्युनिटी पे मैसेज कर देते होते हैं, अगर आज की नहीं तो मेरी कल वाली कम्युनिटी पे उनका मैसेज होगा, वहाँ से भी उनकी तरफ जा सकती हैं। अगर उनको टाइम मिला तो वो भी इंशाल्लाह आपकी तरफ आएंगे। जो फ्रेंड्स मेरे साथ हैं उन्होंने मैसेज अभी नहीं किया कम्युनिटी पे, आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरफ आऊँ तो, या कोई और फ्रेंड आपके पास आए तो आप ऐसा करें कि कम्युनिटी पे छोटा सा मैसेज छोड़ दें और हम और बाकी फ्रेंड्स जो हैं वो वहाँ से इंशाल्लाह आपको ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग, लेकिन चैट के अंदर अब हम नहीं लगा रहे मैसेज। आज तो मेरे पास नाइट पाथ भी नहीं आया। मुझे लगता है नाइट पाथ जरिए पूछनी पड़ेगी मुझे। कल वो मेरे गेस्ट को तंग कर रहा था और आज वो आया नहीं है। एकदम चीज उसका जो है वो बबल कर रहे। अब मैं उसको लेके आने लगी हूँ। अमित शुक्र अभी तक मेरे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। आप काफी देर आज मेरे साथ ठहरी। आज का काम ही लंबा था, आज का काम ही लंबा था। फ्रेंडली साथ साथ रहे हैं इसलिए मैंने इतना लंबा टाइम आपके साथ गुजार लिया है। बस अब मैं उसको लाने वाली हूँ बाहर, लास्ट वाले को। थोड़ी सी जगह बनाती हूँ उसके लिए। आप कहाँ गिर रहे हो? मेरा साल्ट एंड पेपर शेकर जो है उसको अच्छा नहीं लग रहा है मेरा चीज़ों को मूव करना। ठीक, यहाँ पे हम जगह बनाते हैं उसके लिए, उसके आजाज में। इसी के ऊपर ला के रखूँगी पहले मैं उसको, क्योंकि वो बहुत गर्म है। कैस्ट आयरन जो होता है बहुत गर्म होता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी बड़ी चीज़ के साथ उसको उठा के निकालूँ और यहाँ पे रख दूँ उसको हाथ को जलाए बगैर। यूजुअली आई बर्न माई हैंड्स, इसलिए कह रही हूँ always be careful, you don't want to burn your hands. That's not funny. All right. नीचे से क्रस्ट उसका बहुत अच्छा बन गया और जो ऊपर वाला है उसका, उस पर भी चीज़ जो है वो मेल्ट हो रहा है। आई रियली अप्रिशिएट अम्मी जान, हम तो शकूर आप हमारे साथ रही थ्रू आउट। एक्टिव लर्नर आप हमारे साथ रहे थ्रू आउट, थैंक यू वेरी मच, रियली अप्रिशिएट दैट। आज तो मेरा कैमरा भी बहुत घूम रहा है क्योंकि कभी ओवन के आगे से हटाती हूँ, कभी टेबल के आगे से हटाती हूँ। उसको कैसे हमको उठाना है, मैं कोई चांस नहीं लेना चाह रही। आप उसमें जो बकरा है बहुत मजे का बन गया। ये देखो इसके अंदर क्या है, देखो कॉटन, वो अंदर से वो फटा भी हुआ नहीं है, न्यू है। उसके अंदर वो रॉ कॉटन है। मैं समझ गई कि मैंने उसको बर्न किया तो वो अंदर से निकला नहीं, वो है ही ऐसा। ऑलराइट, बच्चों को खुशबू आने लग पड़ी है, चक्कर लगा रहे हैं किचन के। जो लास्ट वाला है दैट्स स्मेलिंग इवन बेटर। अगर किसी ने कम्युनिटी को तो लाइक करें या ना करें, आप मेरी लाइव को अगर 2 और 2-3 लाइक्स मिल जाए तो मेरे आज 20 हो जाएंगे लाइक्स।
That would be amazing. अभी किसी ने अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दे. मैं कभी भी कहती नहीं होती वैसे, आपकी मर्जी होती है. आई ऑलवेज लीव इट टू यू गाइस. लेकिन आज मैं 18 देख के कह रही हूँ कि अगर एक दो और मिल जाएं तो मजा हो जाएगा. मैं भी कहूँगी मुझे 20 लाइक्स आए. मैं तो छोटी सी लाइव हूँ बेचारी, लाइव किचन वाली. अपना टाइम भी पूरा कर रही हूँ, वॉच आवर्स, और मैं आप लोगों को तो चीज़ें बता रही हूँ. आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, बनाएं और मुझे बता दिया करें कम्युनिटी पे, उस पोस्ट के नीचे बता दिया करें. 8 फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो आज मुझे थोड़ा सा लाइक और दे दे. थैंक यू साकी फॉर चेकिंग अप ऑन अस. साकी यू हैव टू चेक माय नाइट वॉच टू. उसको मेरे लिए सेट कर देना. कल उसको मैंने अभी उसको कमेंट्स नहीं दी हुई थी, तो कल वो सोल को भी थोड़ा सा डांटा था, बाजी बुशा को भी थोड़ा सा सोल स्टिच को उसने टाइम आउट दे दिया था, बाजी बुशा को डांट पड़ी थी. और वो समझ रही थी उन्होंने पता नहीं शायद कुछ गलत कर दिया. मैंने कहा नहीं बाजी बुशा, आपने गलत नहीं किया. आप अगर 1 मिनट और ठहर जाएं तो जो पिज़्ज़े की शक्ल है वो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस दफ़ा मैं उसकी चीज़ को ऊपर से टोस्ट कर रही हूँ, ब्रॉयलर के नीचे रख के. ठीक है. आई नो कि लाइव लंबी हो गई है आज. आई एम सॉरी अबाउट दैट गाइस, बट इट्स वर्थ इट. जी जिस थैंक यू वेरी मच. हमने आप एक्टिव आपको दोस्त बना लिया है सिंपली लिविंग ने. तो एक्टिव जब आपके पास टाइम हो आप इनको रिटर्न करें, लेकिन बहुत जल्दी रिटर्न ना करना, नहीं तो स्पैम हो जाएगा उनका. मेरे साथ सुबह ये हुआ है. जो सुबह मैं सबको कहती हूँ कि अगर आपने मुझे फ्रेंड बनाया है तो प्लीज़ मैं नेक्स्ट डे आपको रिटर्न करूँगी, और कुछ लोग इंसिस्ट करते हैं, और जब वो इंसिस्ट करते हैं मैं दे देती हूँ, तो उसमें उनका भी नुकसान हो जाता है और मेरा भी. तो मेरे नंबर सुबह फिर गिर गए. मुझे उसका बहुत अफसोस हो रहा है. अगर हम चंद घंटे दे दिया करें या एक दिन दे दिया करें, जिस तरह अगर आपने दिन को किया है तो रात को मांग लिया करें रिटर्न. और अगर कोई आपको कहता है कि हम प्लीज़ आपको लेटर देंगे तो आप प्लीज़ उनको कह दिया करें अच्छा जी, क्योंकि मैंने सुबह 2-3 लोगों की बात मानी और मसला हो गया मेरे साथ. मुझे बहुत अफसोस हुआ आज. जब मैं उनके चैनल पे गई तो वहाँ उन्होंने लिखा हुआ था प्लीज़ फ्रेंड आप सारी वीडियो देखकर आप हमें लेटर देंगे. और जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने क्या किया कि मेरी लाइफ के नीचे लिख के चले गए कि वेरी गुड. और जब देखा नहीं, वॉच टाइम नहीं दिया उन्होंने मुझे, तो जब मैंने देखा तो मेरा नंबर उसी वक्त पता लग गया कि गिर गया. सो ये हो रहा है फ्रेंड्स. आप प्लीज़ थोड़ा 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 चेंज किया करें. हाँ जी, एक्टिव जर्नल भाई जो हैं वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिटर्न करेंगे. उनकी गारंटी मैं देती हूँ आपको. मोबी साकी मैं, हम में से जिसको भी आप करेंगे हम आपको इंशाल्लाह देंगे, वीडियो वॉच करके देंगे और थोड़ा सा ठहर के देंगे. ओके जी, और मैं बंद कर दिया मैंने. पिज़्ज़ा बाहर आ रहा है. बी रेडी फॉर दैट. द बेस्ट वन इज कमिंग आउट. बहुत 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 कैसे लेकर आए तो खा के रखिए इंशाल्लाह. ये मैंने उसको वहीं से उठा लिया है. ये देखिए. ठीक है, कैस्ट आयरन से उठाया क्योंकि कैस्ट आयरन तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गर्म है. ये लीजिए, ये कैसा है. इसका क्रस्ट देखें और इसकी टॉपिंग्स देखें, कलर देखें चीज़ का, हर चीज़ इसमें परफेक्ट है. 3 तरह के मैंने आपको दिखा दिए. ठीक. तो अब इसको ये देखिए. कैन यू गाइस सी दैट. खैर मैं ऊपर की लाइट ऑन करती हूँ. इसके ऊपर सारी यम्मी टॉपिंग्स हैं. ऑल द यम्मीनेस इज देयर. वी हैव चीज, अनियन, tomatoes, peppers, olives, spinach, and tomato sauce. And we have a nice crispy crust.
नीचे से क्रस्ट भी आपको दिखाते हैं ठहरे जरा, बिकॉज मैंने उसको लोहे के ऊपर बनाया था नीचे से, उसका मुझे यकीन है कि उसका क्रस्ट भी बहुत अच्छा होगा। देखा आपने, उसका क्रस्ट भी नीचे से क्रिस्पी है। चलें जी फ्रेंड्स, ये तो हो गया आज का हमारा काम। आपको हमने डो बनाना भी सिखा दिया इसी लाइव में, और हमने आपको पिज़्ज़ा बनाना भी सिखा दिया बगैर चीज़ के और टोमेटो सॉस के, और चीज़ और टोमेटो सॉस के, और सारी टॉपिंग इन एवरीथिंग के साथ फुल पिज़्ज़ा। सिंपली लिविंग खुश हो रही हैं, उनको मज़ा आ रहा है देखने में, हम तो शकूर खुश हो रही हैं। एक्टिव लर्नर कह रहे हैं बेस्ट ऑफ ऑल थ्री, यस इट इज़, यस इट इज़। वो बिल्कुल डाइट वाला है जिसको whoever does not want cheese or tomato sauce उसके लिए वो है, who wants a little cheese and few toppings उसके लिए वो है, and who want a full blown pizza उसके लिए ये है। चले जी ठीक, फिर अब लाइव बंद करते हैं क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हमारा। मैं यहाँ से टाइम भी, हाँ जी हमारे 2 आवर्स पूरे हो गए आज। वैसे तो 2 आवर्स का ही होता है, सारे 2 आवर्स का ही करते हैं, 3 आवर्स का भी करते हैं, लेकिन मैं 1 आवर का 1.5 का करती हूँ ताकि मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँ। लेकिन आज हो गया, लेकिन देखिए मैंने आपको सब कुछ सिखा भी दिया उसमें। ठीक है, इजाज़त। Okay guys, I'll see you guys tomorrow with something yummy, equally yummy, simple diet, or like cheating like today. I cannot say which one, but it's gonna be good. Sorry, मेरा कैमरा मेरे हाथ में है और वो हिल रहा है। So thank you for coming. Jazakallah for watching me. Jazakallah for giving me your time and staying with us. I hope everybody has left a message in the community, and I hope everybody's given me a thumbs up. If not, still, thank you very much. Friends, you are watching from outside, thank you very much. Friends in the chat, thank you very much. I really appreciate your time and your patience with me. Thank you very much. So I'll see you tomorrow. I'm going to close this now. Khudafiz. I'm going to eat that pizza now, garam garam. आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ओके।